Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बहुत से लोग कह रहे हैं कि आप अपने चैनल का नाम चेंज करें, क्योंकि मेरे चैनल का नाम अभी नाउन है। हम इसको भी चेंज नहीं कर सकते क्योंकि हम इसको खुद चेंज करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर सकते। ये मेरी मिस्टेक की वजह से इसका नाम नाउन रखा गया। नेटवर्क स्लो होने की वजह से पता नहीं क्या मेरे से मिस्टेक हो गई, जिसकी वजह से नाउन ये नाम रखा गया। तो मैं इसको चेंज नहीं कर सकता, इसको मैं 3 माह बाद ही चेंज कर पाऊंगा। सो फ्रेंड, अभी तक तो ये मेरे चैनल का नाम नाउन ही रहेगा। 3 मंथ बाद एनोनिमस टीचर पर मैं कर लूंगा। तो आपने घबराना नहीं है, आपने हमारी वीडियो को शेयर करना है, सब्सक्राइब जरूर करना है। अगर हमारे चैनल पर कोई नया है तो उसके लिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो नीचे दी गई जो आपको दिख रहा है बेल आइकन, आप उसको दबाना तो बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि हम जो भी वीडियो अपलोड करते हैं कुछ दिनों बाद या कुछ मिनट बाद, कुछ क्षण बाद वो डिलीट हो जाती है, क्योंकि यूट्यूब पर हैकिंग अलाउ नहीं है। तो अगर आप सबसे पहले देखना चाहती है तो आपको सबसे पहले बेल आइकन के बटन को प्रेस करना होगा, तभी हमारी आप लेटेस्ट वीडियो को देख पाएंगे। और ये जो आप वीडियो देखने वाले हैं ये हम रीअपलोड कर रहे हैं अपने YouTube चैनल पे, क्योंकि हमारे पिछले चैनल पर ये वीडियो डिलीट हो चुकी थी, तो हम इसलिए इसको दोबारा रीअपलोड कर रहे हैं। अगर आप इसको दोबारा देख रहे हैं तो प्लीज आप इसको लाइक जरूर कर दे और शेयर तो बिल्कुल मत करना भूलना, क्योंकि हमें आपका बहुत ज्यादा सपोर्ट चाहिए। बहुत से पीपल ये कह रहे हैं कि आप YouTube पर क्यों नहीं अपलोड कर रहे वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं जो ये YouTube पर इतनी मेहनत कर रहा हूँ कोई भी नहीं करता। ये जो मैं काम कर रहा हूँ, मेरे फैमिली मेंबर, होम और मेरे फ्रेंड भी इसको कुछ खास समझते नहीं है, अच्छा नहीं समझते। वो सब ये कहते हैं कि ये टाइम वेस्ट है, इससे कोई फायदा नहीं होगा। तो फ्रेंड, वो भी बिल्कुल ठीक ही कहते हैं, इससे मुझे कोई फायदा तो नहीं होगा, इसमें तो देखने वाले को फायदा होगा। ऊपर से मैं बहुत ज्यादा मेहनत करता हूँ अपनी वीडियो पे, बहुत ज्यादा मेहनत करता हूँ, बहुत ज्यादा, शायद ही कोई करता हूँ। यूट्यूब पे तो हर कोई मेहनत करके ही अब वीडियो अपलोड करता है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा मेहनत करता हूँ। फ्रेंड, बात ये है कि जब मैं वीडियो इतनी मेहनत करके अपलोड करूँ तो किसी के फ्लैग की वजह से वो वीडियो रिमूव हो जाती है, तो मुझे फिर यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करना, यूट्यूब पे फिर वीडियो अपलोड करने का दिल नहीं करता, क्योंकि इतनी ज्यादा मेहनत करो तो उसके कुछ मिनट या कुछ दिनों बाद वो डिलीट हो जाए। तो अगर आप चाहते हैं तो मैं वीडियो ज्यादा से ज्यादा यूट्यूब पर अपलोड करूं, जल्द से जल्द करूं, तो आप मेरी वीडियो को लाइक किया करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें, ताकि मेरे चैनल की ग्रो हो सके। तभी मैं बहुत ज्यादा मिकदार में वीडियो को अपलोड करना शुरू कर दूंगा। Hello everyone. I am back. I am Asha. I am partner of 𝗶𝗶 My friends, my students, my fans, and other peoples. My first channel is deleted. So this is my new YouTube channel. Please subscribe and share my YouTube channel. And today we will talk about the how to install 𝗨𝗽𝗱 netthunter in any Android device. Guys, I cannot tell you properly. And I cannot show full practical. If I will tell you full properly and make the practical, so maybe my channel is deleted. Don't worry guys. I already make the practical tutorial and properly everything. You must just check the description. All properly and practical link in description. You just check my description. In this video tell you how to work, how to download, how to install, and tell you properly everything. So please full watch my tutorial. Guys, and visit our website. If you visit our website, so you will find everything with our website. This is latest installation trick 2018. This trick is very easy. If you do not understand anything, so you can ask me. I will reply you. You follow me step by step. I am starting now this tutorial. Go to Play Store and download 𝗶𝗶. I have already downloaded. Now install and open 𝗶𝗶.
grant permission for super user. Choose the option System bin, then click on Install. OK. It's installed successfully. Here is the root explorer. Install this app. You can download it from description link. I have already installed. Now open your browser and go to Kali Linux official website. Click on 3 dots. The download, choose Kali Nethunter. Click on Kali Nethunter download. Download the image file of 1+1 cm 12.1 zip file. If you have Nexus device, then you can download Nexus image file. Otherwise, download 1+1 cm 12.1. I have already downloaded in my SD card. Now extract the Kali Nethunter folder. OK. It's extracted now. Now go to Nethunter folder, click on Data. Then App. Install 3 application from here. Nethunter. Then next Android VNC Viewer. The last Nethunter terminal. See, all are installed now. Again, go to Nethunter folder. Click on Data, then Local. Then move the Kali Nethunter to your internal storage. See, this file is in my device internal storage. You have to also put this file in your internal storage. Before opening Root Explorer, first you have to open Nethunter. Allow the all permission. Ops. In my device, screen overlay is detected. To remove this, follow my step. Just untick the all. Mostly, this problem comes in Samsung device while recording screen. Now allow all permission to Nethunter.
grant permission for super user access. See, here is nothing to show now. Now open Root Explorer app. Click on Data. If your phone is rooted, then it's go to the Data folder. Again click on Data. Then search the folder 𝗵𝗹𝗁𝗁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 𝗁
Then click on Files. Then click on Scripts. Now we have linked first 3 files to the system bin. Click right side to Storage. Then click on 2 dots. Again click on 2 dots. Again click. Go to System. Then Bin. Now click left side to the scripts. Press the file 𝗏𝗏𝗁𝗏𝗏𝗏. Go to down click link. Link to the file. Same process for second file 𝗏𝗏𝗁𝗏𝗏𝗏. And last for 𝗏𝗏𝗁𝗏 login. See, these 3 files are linked to my device system bin. Now open NetHunter. Click on 3 dots. Then click on Kali Manager. Then click on Install 𝗏𝗏𝗁𝗏 root. Then click Use SD card. Click on Full ch root. It's starting installing ch root. At least of 10 minutes to 15 minutes it will takes time to full install. It's uncompressing the netthunter file which I put in my internal storage.
and 5 minutes it takes for deploying the CH route. Thank for watching. If you have any problems so you can ask me. And don't forget to like and share.